ट्यूशन चलती है बैच के अंदर। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ऑलराइट, सो विल बी रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स एंड विल डूइंग न्यू, कुछ नई चीजें हम करेंगे यहाँ पे और कुछ चीजें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू। तो आज का जो पहली चीज मुझे आपको यहाँ पे रिवाइज या मैं कहूंगा जो नई चीज आपको बतानी है वो ये बतानी कि आपका व्हाट इज विल बी हैपनिंग विद द पोलर बॉडी। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे, विल स्टार्ट द डिस्कशन। नाउ वी नो दैट योर सेकेंडरी oocyte जो आपका होता है वो आपका रिलीज होता है आपके ग्राफेन फॉलिकल में से, एंड दैट विल बी हैपनिंग ऑन द 14th डे। वो इवेंट होगा आपका 14th डे के अंदर, ठीक है। नाउ हमने उसका मियोसिस पूरा स्टडी किया है, वी हैव सीन द मियोसिस ऑफ द oogenesis का हमने पूरा देखा है। तो आपको कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो आप ऑलरेडी जानते हो। सो आपका अगर ये मेरा है लाइक लेट्स से दिस इज माय प्राइमरी oocyte, दिस इज माय प्राइमरी oocyte ओवर हियर। अब प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 खत्म करता था, प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 खत्म करता था तो आपको दो चीजें मिलती थी, याद रखना। प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 खत्म करता था आपको दो चीजें मिलती थी। एक आपको मिलता था सेकेंडरी oocyte, और दूसरी चीज क्या मिलती थी आपको? पोलर बॉडी। राइट, सेकेंड थिंग व्हिच आई वाज रिसीविंग ओवर हियर वाज माय पोलर बॉडी। तो पहला था आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे, और दूसरी थी आपकी यहाँ पे आपकी पोलर बॉडी। सेकेंड थिंग वाज योर पोलर बॉडी। पोलर बॉडी आपके यहाँ पे काफी स्मॉल होती है, पोलर बॉडी इज ऑलवेज बी स्मॉल, राइट। साइटोप्लाज्म उसके अंदर काफी ज्यादा कम होता है। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म आपको काफी ज्यादा आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो यू हैव वन पोलर बॉडी एंड अ सेकेंडरी oocyte इज बीन फाउंड। ये है आपका आफ्टर द मियोसिस 1, ठीक है। अब जब यहाँ पे मियोसिस 2 खत्म किया गया, व्हेन द मियोसिस 2 वाज कंप्लीटेड, सो जब सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 खत्म किया, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग। तो जब इसने मियोसिस 2 खत्म किया, सो नाउ यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ वन मोर पोलर बॉडी। यहाँ पे आपको एक और पोलर बॉडी आपको बनते हुए मिलेगी। सो यू विल हैव वन मोर पोलर बॉडी इज गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है। पोलर बॉडी तो आपको याद ही रखना है कि ये मेरा हुआ कब, ये मेरा हुआ आफ्टर मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे, दैट माय सेकंड oocyte ने मियोसिस 2 खत्म किया, मुझे मिला यहाँ पे अपना ओवम, दैट इज योर एग एंड अ पोलर बॉडी। ये दो चीजें मुझे यहाँ पे मिली। अब हम यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं, हमारी जो पोलर बॉडी यहाँ पे रिलीज की गई थी, हमारी जो पोलर बॉडी यहाँ पे रिलीज की गई थी आफ्टर मियोसिस 1 के बाद, जो पोलर बॉडी यहाँ पे आपकी रिलीज की गई थी, दैट पोलर बॉडी विल ऑल्सो कंप्लीट द मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 के बाद आपकी एक पोलर बॉडी बनी थी, आपका सेकंड oocyte बना था। ये पोलर बॉडी को भी आप जब ओवुलेशन होगा तब आप रिलीज कर दोगे, लेकिन याद रखना ये जो पोलर बॉडी है आपके पास ये भी मियोसिस 2 खत्म करेगी, एक सेल नहीं, ये भी खत्म करेगी। सो इट विल ऑल्सो कंप्लीट द मियोसिस 2। और जब यहाँ पे मियोसिस 2 खत्म करेगी ये पोलर बॉडी, तो इसके अंदर से और दो पोलर बॉडी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, इफ समवन आस्क यू कि आपको टोटल oogenesis के अंदर, if they ask you in the oogenesis how many number of polar body you will find ultimately, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1, 2 and 3। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि oogenesis के टाइम पे आपको कितनी पोलर बॉडी बनते हुए आपको मिल जाएगी, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 3 पोलर बॉडी। 3 polar body is something you will receive during the oogenesis। इतनी पोलर बॉडी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखना ये जो आपने मियोसिस 1 का जो आपको पोलर बॉडी मिली थी वो भी आपका मियोसिस 2 खत्म करेगी, दैट विल आल्सो डू द मियोसिस 2, और उसमें से भी आपको दो पोलर बॉडी मिलती है, तो दो वो हुई और एक यहाँ पे मिल जाती। सो 3 पोलर बॉडी इज अ नंबर विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है,
अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको याद हो तो हमने जब oogenesis सीखा था, हमने जब पढ़ा था, सो हमने देखा था वी हैव अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वी हैव अ प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte जो आपका यहाँ पे था, इट वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर के जो मेरे यहाँ पे सेल्स थे, उनका नाम क्या था? ग्रेनुलोसा सेल्स। Granulosa cells. वेरी गुड। हाँ जी, यू कॉल हिम एज अ ग्रैन्यूल ग्रैन्युलोसा सेल्स। बहुत बढ़िया, ये बात आप यहाँ पे क्लियर कट जानते हैं। एंड सेंटर में यू विल हैव अ प्राइमरी oocyte, आपका सेंटर में आपको मिल जाएगा। ओके, एंड दैट वाज माय प्राइमरी फॉलिकल, दैट वाज माय प्राइमरी फॉलिकल। अब हमने कुछ चीजें देखी थी, लेकिन अब जो इनसाइड में मेंशन किया उसके हिसाब से भी हम एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल अब मेरा कन्वर्ट होगा मेरे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब सेकेंडरी फॉलिकल में बेसिकली आपको क्या मिलता है, यू विल हैव कि आपकी जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है आपके यहाँ पे, उनका तो लेयर आपका डबल हो ही जाएगा। दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर, उनका लेयर तो आपको डबल मिलता ही मिलता है। उसके साथ साथ यू विल आल्सो हैव अ थीका सेल फॉर्मेशन, उसके साथ यू विल आल्सो हैव अ थीका सेल फॉर्मेशन, उसके साथ साथ ध्यान रखना, यू विल आल्सो हैव अ थीका सेल फॉर्मेशन, राइट? एक्सक्यूज मी। So you'll have a thick cell formation surrounding them. सेंटर में you know that very clearly, you will have your primary oocyte आपका सेंटर में आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा, that is something you'll find in the center. Okay, तो ये बन गया मेरे यहाँ पे secondary follicle. This becomes over here as my secondary follicle. Now what you have to understand here is, right, what you get to have to understand here is that we have discussed that you have a theca interna and theca externa which have been formed, but apparently yaad rakhna, you have only theca cell which have been formed over here. Let's do one thing, you make theca interna and theca externa when you have a tertiary follicle. So जो theca interna theca externa जो यहाँ पे बनाया जाता है ना, that is something you will be forming in the tertiary follicle. Now we are just following the NCERT right now. Actually में you will get to see in the secondary follicle itself the theca interna and theca externa is getting formed. But याद रखना that when we make a tertiary follicle and make a large tertiary follicle, so it will have the theca interna, theca externa. So this will have the presence of a theca externa and interna. तो आपको मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप ये याद रखें कि आपका जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है तब आपको थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना आपको देखने के लिए मिलेगी वहां पे। That's when you will get to see these two layers will be formed. Now whole idea of letting you know about this theta interna externa is going to be why, because यहां से आपका एक हार्मोन आ रहा है and that hormone is your estrogen. So थीका इंटरना एक्सटर्ना में से कौन रिलीज करता है मेरा एस्ट्रोजन? Theca interna. राइट। So you will have your theca interna, तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, you will have your theca interna, theca interna, एंड यही होता है आपका जहां से एस्ट्रोजन आपका रिलीज किया जाएगा। ओके, theca externa is something which won't be releasing something, but you will have the interna one with the one which is going to release estrogen. तो ये एक चीज याद रखना, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। दिस इज समथिंग आई विल फाइंडिंग फॉर्मिंग इन द टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। This is something which will be finding happening in your tertiary follicle, right? Now in the center, what you will get to see एक fluid filled cavity यहाँ पे होती है, उसका नाम क्या होता है? Antrum. Antrum. Right. So fluid filled cavity I'll be finding over here, and that cavity over here will be called as my antrum. Something also I will be finding in my tertiary follicle के अंदर, right? और याद रखना tertiary follicle के अंदर ही my primary oocyte will complete the meiosis one and will become my secondary oocyte. So this is going to complete my meiosis one, and now you will be having a presence of a secondary oocyte. So in the center we'll be having your secondary oocyte. Okay, this is one thing you have to know, right? सो ठीक है, इंटरना कब बन रहा है प्लीज ये याद रखना, बिकॉज यहाँ से आपके हार्मोन्स आएंगे, यहाँ से आपका एस्ट्रोजन वाला हार्मोन आपका आएगा, एंड दैट विल हैव अ रोल टू बी प्लेड, सो दैट शुड बी वेरी अल्टीमेटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। बाकी जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जुना पेलुसिडा, कोरोनारेटा, वो सब तो आपको याद ही रखना है, जैसा है वैसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है।
Now the next thing is going to be, next चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, that is going to be, we have to discuss something in terms of the extra embryonic membrane. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे something like your extra embryonic membrane. Extra embryonic membrane. अब देखते कि ये है क्या और इसका काम क्या होता है. So this might be a slightly newer one for you to understand. So now let's see what will be happening in this. चलिए बात करते हैं, में एक्स्ट्रा में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं. Now what do you get to see in this ना, that जब हम बात करते हैं में एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, you should know this thing very clearly, that आपका जो एम्ब्रियो होता हो डेवलप होते हुए आपके एंडोमेट्रियम के अंदर, इट इज सराउंडेड बाय सम लेयर्स. उसके आसपास आपको कुछ नई लेयर्स आपको बनती मिलेगी, एंड दोज लेयर्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द एम्ब्रियो. सो अगर आपका एम्ब्रियो वहां पे ग्रो कर रहा होगा, सो एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय सम लेयर्स. ठीक है. सो अगर कोई एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, assume that this is the embryo which is growing over there. सो ये एम्ब्रियो के आसपास आपको कई सारे आपको लेयर मिल जाते हैं. यू फाइंड फ्यू लेयर्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो. यू विल हैव सम लेयर्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के आसपास आपको कुछ ऐसी लेयर्स मिल जाएगी. Okay, these layers surrounding the embryo are called as my extraembryonic membrane. अब extraembryonic membrane जो यहाँ पे होती है, इनके आपको चार नाम याद रखना है. So there is the embryo, and embryo surrounding you will have extraembryonic membrane. Now this membrane will have 4 names. इसके अंदर आपको चार नाम आपको यहाँ पे याद रखना है. One is going to be your amnion. Second is going to be your allantois. Third is going to be your chorion. एंड चौथी जो यहाँ पे आपकी लेयर आएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर यॉक सैक. So these are the things you have to know, that you will have your yolk sac, chorion, allantois and amnion. ये आपको चार लेयर मिलती है. These are the 4 layers and these are called as my extra embryonic membrane. सवाल यहाँ पे ये आता है कि लोग करते क्या है, what kind of role this layer have to be playing over there. तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ. तो अगर आप यहाँ पिक्चर देखोगे तो बीच में आपको यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एंड देन यू कैन सी ऑल द 4 layers over here. आपको यहाँ पे आउटर मोस्ट में आपको यहाँ पे कोरियन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So you can see the chorion as a outermost layer. You can see the amnion after that. You can also see the allantois आपको यहाँ पे दिख जाएगा, right? And you can also see the yolk sac. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो आपकी 4 लेयर आपकी यहाँ पे है, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे. These are my extraembryonic membrane. ये जो बाद में बनाई जाएगी आपकी यहाँ पे एम्ब्रियो के आसपास आपको मिल जाएगी. इनका काम यहाँ पे क्या होता है, what kind of role they are playing. So चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं कि इनका रोल यहाँ पे क्या होता है. So let's start with the amnion. एमनियन से हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट करता है. तो अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द एमनियन, सो एमनियन जो लेयर होती है, दिस लेयर विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड. सो ये लेयर आपकी जो होगी, दिस लेयर विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड. सो इस लेयर के अंदर आपको एक फ्लूइड मिल जाएगा, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड. अब ये एमनियोटिक फ्लूइड जो आपको मिलेगा, सो विल हैव एमनियन विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच विल बी सीन ओवर इन देम, राइट. अब ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे, इसका काम क्या होता है. सो ये जो फ्लूइड आपको मिलेगा एमनियन के अंदर, इस फ्लूइड का यहाँ पे काम क्या होगा. अगर आप इस पिक्चर को देखोगे यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट आपको एमनियन की आपको यहाँ पे लेयर मिल रही है. यू कैन वेरी क्लियरली सी द एमनियन की लेयर आपके ऑन द आउटर साइड. सेंटर में ये जो आपको जो पूरा फ्लूइड दिख रहा है, दैट्स माय एमनियोटिक फ्लूइड. ये जो सेंटर में आपको यहाँ पे जो फ्लूइड दिख रहा है, दैट इज योर एमनियोटिक फ्लूइड. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड आपका यहाँ पे ये करता क्या है. सो याद रखना, इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है. एमनियोटिक फ्लूइड आपके यहाँ पे काम करेगा एज अ शॉक एब्जॉर्बर. इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट. मतलब जो भी लाइक मैकेनिकल मूवमेंट अगर मदर कर रही है,
तो उससे जो भी शॉक क्रिएट होता है, फिजिकल शॉक क्रिएट होता है, जो भी मूवमेंट वो कर रही है, चल रही है, बैठ रही है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे आपका एमनोटिक फ्लूइड। तो ये शॉक आपका आपका ये जो फ्रिक्शन आपका आ रहा है, जो शॉक जो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लेडी, दैट इज नॉट रीचिंग टुवर्ड्स द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो तक आपका जाता ही नहीं है। दिस इज समथिंग जो आपके एम्ब्रियो तक वहां पे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस वेरी थिंग क्लियरली दैट इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. So amniotic fluid is something you find in the amnion, and this amniotic fluid is going to work as a shock absorber. That's the first thing you have to know. Second thing, it avoids the desiccation of the embryo. Second thing, it avoids desiccation of embryo. That's the second thing you have to know, that it is going to avoid the desiccation of the embryo. That means what? Embryo को वो like जो fluid वाला environment होता है ना, वो चाहिए होता है हमेशा. The embryo always needs the surrounding which will have some amount of fluid in its surrounding. If it is not there, then the embryo will not be able to sustain itself over there. So you have to provide a liquid environment, or I would say you have to provide a fluid environment nearby the embryo, and that is something which has been seen over there. तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. So you will have a presence of this embryo, and this embryo will be having surrounded by a fluid, and that fluid avoids the desiccation of the embryo. Desiccation मतलब वो like सूखने से बचाना, ऐसा कह सकते हैं आप, like dry होने से बचाना. So avoid desiccation of the embryo. That is the second role of my amniotic fluid. तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि amniotic fluid के यहाँ पे दो काम होते हैं. It works as a shock absorber. जो भी लेडी वहां पे मूवमेंट शो करी, whatever the movement, whatever she is doing while having a baby while having the fetus in the uterus, all the shock created by the movement is been absorbed by the fluid, and it also avoid the desiccation of the embryo. So ये दो चीजें आपको याद रखनी है. Something you find in the amniotic fluid, something the role of the amniotic fluid is going to do, right? तो बोले ये याद रखना आप यहाँ पे. क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है जी. someone has a question क्या? हाँ जी गीतांजलि बताइए, कैसे हैं आप? Sir, can you explain again, sir, about the avoid desiccation of embryo? I can't understand. Right. So what will be happening in the to avoid the desiccation of embryo actually means what? The embryo always needs certain amount of fluid environment in its surrounding. The embryo always needs certain amount of fluid in its surrounding. If it does not have that kind of fluid in its surrounding, then the embryo will not survive. Embryo will not survive. So that is called as that is how you are going to maintain that it is not drying up. To say that it will avoid the desiccation of the embryo, I can, in a simple language, I can say it avoids the drying of the embryo, because embryo needs certain amount of fluid in its surrounding ताकि वो वहां पे survive कर सके. So that is something done by my amniotic fluid. It avoids the drying, I would say, of the embryo, so that it can survive over there. So that is something you have to know. ये बात आप यहाँ पे याद रखनी है. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे यहाँ पे, जो आप आने वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे थोड़ा सा उसके बारे में. There is one thing you will get to see over here, and please remember this thing. Now what happens now? Now please try to see over here. You have the embryo, and it is surrounded by the amniotic fluid, and it is the amnion, which is the outer layer over there. Now embryo will always have new cells are getting formed, some dead cell will be formed over there. So you can always find some dead cells in the amniotic fluid. So amniotic fluid में कुछ ना कुछ embryo के आपको dead cell मिल जाता है, right? Now let's try to see what has been done over here. See, now many times a doctor, what can it do now? Many times a doctor, what it will do? It will collect some amniotic fluid. It will collect some amniotic fluid. So this can be collected. If a girl is pregnant, you can actually, using the syringe, you can collect amniotic fluid. Now, when a doctor collects some amniotic fluid, please understand he is trying to collect some dead cells of the embryo. This amniotic fluid is going to be having few dead cells of the embryo. It will be having few dead cells of the embryo. It will have few dead cells of embryo. Now, what has been done using this now? If you can get to have some few dead cells of the embryo, you can actually see whether the cells have XX chromosome or XY chromosome.
You can actually check over here whether the cell will have XX chromosome or XY chromosome. Now, what happens if you are doing this? Now, you are actually trying to know the gender of the baby, or you are trying to know the gender of the fetus. So, this is something which was done previously. आज से काफी ज्यादा साल पहले ये सब चीजें की जाती थी. People used to do that. People used to collect this amniotic fluid from the amnion because it used to have some kind of dead cells, and now they used to check whether what is the gender of the baby, right? And then they would go for a selective abortion if it was a female gender, right? Something you must have heard of in your 10th grade or 9th grade. Female feticide was something which was very common. I won't say it was very common, but it is something used to be practiced in our country way back, right? Apparently, it has not been practiced. Apparently, there are strong regulations surrounding itself. कई सारे strong laws आपके यहाँ पे आ चुके हैं, and people are also quite well aware about the things. So that is why it is not been done. Either the doctors are quite aware about the things. If at all someone is doing that, then they can lose their license and they might not be able to do their practice for rest of their life, right? तो अब ये सब नहीं होता, but पहले के टाइम पे ये हुआ करता था, right? And this is how they used to get to know the gender of the baby. ठीक है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं याद रखना, ये चीज भी करी जाती थी पहले, राइट? लेकिन ये अभी भी करा जाता है, बट फॉर द बेनिफिशियल पर्पस के लिए. इवन टुडे दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन, बट फॉर द बेनिफिशियल पर्पसेस. फायदे के लिए भी ये चीज को यहाँ पे किया जा सकता है. अब कोई मुझे बता सकता है इसमें फायदा क्या हो सकता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट कैन बी एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस थिंग, और इसको हम फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं इस तरीके को? अरे वाह, क्या बात है, पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. अच्छा मिसबा, बताइए मिसबा कैसे है? Know about the genetic abnormality. Right, Misbah. Very good. This technique can be used for the beneficial purposes. Now let's try to understand this thing. Let's assume there's a baby developing in the embryo. So there's a fetus developing in the mother's body, and there's a possibility of genetic disorder. There's a possibility. Let's say there's a possibility of genetic disorder. Now, if there's a possibility of genetic disorder, then you can actually do this technique. And after doing this technique, you can actually conclude whether the genetic disorder is there or not. Now, let's assume that there is some kind of chromosomal disorder, right? Assume that normally you need to have a 23 pairs of chromosome, but now over here you have only, let's say, 21 chromosomes. Yeah, 21, or you have, instead of 46, you have only 45 chromosomes. अगर ऐसा होता है, if you have a less number of chromosomes, if you have a more number of chromosomes, then legally you can undertake the abortion. Legally you can terminate the pregnancy. So please try to understand this thing. This technique can be done for the better purposes as well. When you think that there is a possibility of a genetic disorder, there is a possibility of chromosomal disorder, in that case ये करा जा सकता है. In that case के करा जा सकता है एक लाइसेंस डॉक्टर के थ्रू, और उसके बाद अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर दिखता है. Now please understand this thing very carefully. अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होता है ना, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. You don't have any kind of treatment for genetic or chromosomal disorder. अगर वो है तो वो रहेगा ही. So in that case, you can legally terminate the pregnancy. One can actually decide and they can terminate. Now that won't create any issues with the people who are actually doing that. आप ये करा सकते हो बिल्कुल लीगल तरीके से, और आप टर्मिनेट कर सकते हो प्रेगनेंसी को. सो दैट हैज बीन अलाउड. ओके, तो ये बात आप भी याद रखना, ये सब भी याद रखना कि इसको करने के फायदे भी होते हैं. यू कैन एक्चुअली गेट टू नो जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेनली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आता है, राइट? एंड व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ना दैट like women in their late 30s, and I would say people who get conceived very late, like couple who get conceived very late, they at times do have this possibility of having a child with some kind of chromosomal or genetic disorder. So that is why it's always better to have some kind of test to be done, right? And then you can terminate the pregnancy, and it's very legal, right? It's actually quite cruel agar after knowing that it has a genetic disorder, you are still allowing that baby to because he won't be having a normal life throughout his lifespan. That's why. ठीक है, तो ये एक बात भी आप यहाँ पे याद रखना, and I hope it's clear to all of you and you don't have any questions over here.
ठीक है, this something should be clear to you now. So अभी के लिए आपको याद रखना है यहाँ पे that you have this amniotic fluid and the story of the amnion is something you have to remember. यहाँ पे एक और मैं टर्म यूज कर दूंगा यहाँ पे आपके लिए जो आप you can like you will be studying this term again later on. There's something as medical termination of pregnancy. There's a term called as your MTP, medical termination of pregnancy. This can be only allowed in certain circumstances. Okay, so that is something you are actually terminating the pregnancy. So याद रखना, this can be only allowed in certain circumstances के अंदर आप इसे वो allow कर सकते हो. बाकी ऐसा नहीं कि आप randomly जाके करा सकते हो. That is not allowed. Okay. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. So that's the amnion. Now let's move on to some other layer. So amnion हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's move on to other layer. Other layer can be my something like your chorion. Now when someone discusses about the chorion, now you don't really have much role in this. Chorion is a layer which helps in the formation of a placenta. It helps in the formation of placenta. Formation of placenta. Now you know this thing very clearly. I think you know all those this thing that हमने एक term पढ़ा था. We have studied one term called my chorionic villi. If you remember this thing, we have gone through a term called as my chorionic villi, and that chorionic villi is the same thing over here, which was forming the placenta. So ये chorion जो आपका यहाँ पे layer है, this is the outermost layer you will actually see over here, and that layer helps in the formation of a placenta. So that's the only role you have to know. इसके अंदर आपको यही एक role इसके अंदर आपको यहाँ पे add रखना है, right? Then after this, the next role over here is going to be of your allantois. Now, if you get a term like allantois, now please remember one thing very carefully, that in the allantois, you won't have any kind of like it is rudimentary in human beings. In humans, it is rudimentary in nature. It is rudimentary in nature. अब ये rudimentary क्यों होता है? क्यों इसका like कोई काम नहीं, like rudimentary का मतलब होता है कि इसका कोई काम नहीं है. Okay. Now it does not have any kind of role to be played in human beings, right? Rudimentary का मतलब ये होता है कि इसका कोई काम नहीं होता human beings के, इसका कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता, right? But अगर मैं बात करता हूँ reptiles और birds के बारे में, if I talk about reptiles and birds, so in reptiles and birds it has a role in respiration and excretion. So it will have a role in respiration and excretion. But that is something you will be finding happening in the birds and reptiles. ठीक है, ये होते हैं आपको मिलेगा आपके birds और reptiles के अंदर. अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे respiration और excretion आपका ये क्यों नहीं कर रहा? Why respiration and excretion is not taken care by my allantois? Anyone can tell me? Anyone? बता सकते हो वैसे सोच के, इतना कोई मुश्किल है नहीं. Placenta doing this work. Because placenta is doing this work. Very true. Placenta is the one which is taking care of this role, and that is why you don't need allantois. So allantois will be there, but it will have no function in the human beings. All the function of the allantois is something restricted to your birds and reptiles. In them you will find it will have a role in the respiration and excretion, but not in the human beings. Okay. So ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Now let's talk about, okay, not the question. Let me talk about the last layer, and the last layer here is going to be your yolk sac. Let me just add a few slides into this. ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. Okay, now when we discuss about the yolk sac, that's the last layer of the amnion, of the extra embryonic membrane. Now yolk sac is also going to be like
it will be empty in the human beings. Yolk sac is basically going to be empty. Yolk sac is going to be empty in humans. That means it won't have any kind of yolk. इसके अंदर आपको yolk देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. Yolk sac के अंदर yolk आपको देखने के लिए मिलेगा. I think yolk टर्म आपने सुना है ना, अंडे के अंदर होता है. अंडे में जो येलो पोर्शन होता है उसे yolk कहते हैं. This is something you've been knowing, right? So in the egg, whatever the yellow portion you get to see, that's a yolk, right? अब yolk जो होता है ना, जो आपको egg के अंदर मिलता है, उसका काम क्या होता है? कभी बताएगा वो yolk का काम क्या होगा एक नॉर्मल egg के अंदर? Anyone? Think and tell me what kind of role the yolk will be playing in the egg. If it's a bird egg, अगर एक duck का अगर egg लेके आता उसमें yolk आपको मिलेगा. So what this yolk is playing a role? Anyone can tell me that? क्या हो सकता है उसका रोल? नहीं मालूम. So yolk जो होता है, it is a source of food. It is actually a source of food where in birds and reptiles. In birds and reptiles. So इनके अंदर आपको yolk content काफी अच्छा मिल जाता है, and that's a good source of food actually. Source of food for what? For developing embryo. Source of food for developing embryo. हमारे लिए नहीं, उनके लिए. So वहां पे अगर embryo develop कर रहा है तो उसको consume करेगा yolk. So it's like when in plants the plant embryo absorbs the endosperm. Similarly over here when the baby crocodile is developing inside the egg, it will consume the yolk in the egg, right? So that it can get itself nourishment over there. Now in humans the yolk sac is going to be empty. It won't have any kind of yolk because all the nourishment is coming from the placenta. In human beings सारा का सारा तुम्हारा nourishment placenta से आ रहा है, तो yolk sac में yolk रखने का कोई आपका यहाँ पे मतलब बनता नहीं है. तो ये चीज आपको याद रखनी है that it is all going to be empty over here. Now the question is कि अगर यहाँ पे खाली है तो इसका रोल क्या होता है? So it will have some role. So याद रखना yolk sac will have a role of blood cells formation. So yolk sac is going to have a role of blood cell formation. So initial stage जब embryo develop कर रहा होता है तब blood cells बनाने होते हैं, बहुत सारे blood cells बनाने होते हैं, and all those blood cells are getting formed in the yolk sac. So RBC, WBC जो भी आपके बनाए जाएंगे ना, वो सारे के सारे आपके yolk sac में ही बनाए जाते हैं. So blood cell formation is something happening in the yolk sac. Where in the embryo. Now please understand this thing. This will be happening only in the embryo. कोई बताएगा adult human के अंदर blood cell कहाँ बनते हैं? Anyone knows that in the adult human being where the blood cells are getting formed? बोलो डॉक्टर साहब बताइए. This is something you must be knowing. It is hard to understand. You don't know where the blood cells are getting formed in the human being. I'll tell you why it's hard to understand. जब कोई बच्चा कहता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कुछ चीजें तो वैसे उसे इंटरेस्ट होता है ये जानने का. उसमें से एक चीज ये होती है कि यार ब्लड सेल कहाँ बन रहे हैं मेरे, हार्ट कैसे काम कर रहा है, ब्रेन के वाले में वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पड़ेगा अपने एंड से. क्योंकि अगर कोई बच्चा कहता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसको कुछ चीजें तो वहां पे मालूम रहती है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? इफ समवन कोई अगर आके बोलता है मुझे कि मुझे फास्ट बॉलर बनना है, तो उसको इतना तो मालूम होता है कि इन स्विंगर क्या होती है, आउट स्विंगर क्या होती है, राइट? He also knows what is going to be like what will happen if I ball a cross seam delivery and what will happen if I like ball a off cutter. He knows everything over there. तो ऐसे जब तुम लोग आके मुझे कहते हो कि सर हमें MBBS करना है, तो like you should be doing all those things, right? बताओ शिखा, बोलो. Sir, in the red bone marrow will be. और कहाँ पे होता है ये रेड बोन मैरो? Bones में. सारे बोन्स में. सही है, आपका आंसर यहाँ पे सही है. The answer is going to be true over here. That you will find this red bone marrow is the one which will form the blood cells. याद रखना आपका जो bone marrow होता है ना, the bone marrow is something you will find in 2 locations. Like you will have multiple locations. आपको 2 main locations याद रखनी है. So first of all पहले याद रखना कि bone marrow is a site. Bone marrow is a site where the blood cells are formed in the adults. So adults के अंदर bone marrow में blood cells आके बनाए जाते हैं. ठीक है. अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका
कि बोन मैरो आपका एडल्ट्स के अंदर आपको कहाँ कहाँ मिलता है. सो बस जो जो बड़े बोन मैरो आपको जो मिलेंगे यहाँ पे, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द फीमर. हाँ जी मंताशा बताइए, बोलिए. नहीं सर, गलती से हो गया था. हाँ, फीमर एंड योर लाइक ह्यूमरस. These are the two bones where I'll get to see the bone marrow. एक तो आपका ह्यूमरस वाला बोन आपका यहाँ पे, राइट, एक ये वाला, एंड अदर इज गोइंग टू बी योर फीमर बोन, थाई बोन, राइट. यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा आपको बोन मैरो आपको वहां पे मिलता है, जहां पे आपके ब्लड सेल आपके बनाए जाएंगे, राइट. सो बोन मैरो के अंदर भी यू विल हैव लाइक टू टाइप्स ओवर हियर. यू हैव अ रेड वन, यू हैव अ येलो वन. तो रेड वन जो होता है आपका वहां पे, उसमें से आपके ब्लड सेल बनाए जाते हैं, ठीक है. तो ये बात आपको यहाँ पे अगेन सबको क्लियर कट याद रखनी है, दैट बोन मैरो इज द वन with the blood cell are getting formed in the adults, right? But in the embryo, yolk sac will take care of the blood cell formation. तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए हमेशा से, right? So these are my 4 extra embryonic membrane which you all have to remember. You have a yolk sac, you have a allantois, you have a chorion, and then you have your amnion. And these are the 4 layers, and you can find question based on them in the MCQ, in the maths of following. You can find these terms. तो इसलिए याद रखना कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सब आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर विद देम, राइट. इवन तो इसको इनसाइड में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट यू शुड बी नोइंग देम बिकॉज दे कैन बिकम पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दे कैन बिकम पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तब ये कहीं स्टेटमेंट में आपको वहाँ पे लगा देंगे वो लोग, एंड देन यू हैव टू नो कि वो स्टेटमेंट सही है गलत है. तो इसलिए ये सब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है. सो क्या ये 4 लेयर आप सबको यहाँ पे क्लियर? इज दिस 4 लेयर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट, ओके, चलो. हाँ जी गीतांजलि, गायत्री बताइए. Sir, due to network, I can't understand after the allantois, the rudimentary in nature. Can you explain again, sir? So allantois is usually in nature. That means what? It won't have any kind of like. It does not have any kind of role. It does not have any kind of role in the human beings. It will only have a role in the birds and reptiles, and the role is going to be of my respiration and excretion. So it will only have a role of excretion and respiration in the birds and the reptiles. So that is something also you have to take into account. So birds and reptiles के अंदर इसका role होगा, humans में इसका कोई role नहीं होता. Okay. Then we have discussed the yolk sac. Yolk sac is going to be empty in the human beings. It won't have the presence of the yolk because all the nourishment is coming from the placenta. Every nourishment to the baby is coming from like mother's body through placenta. So that is why you don't need to have a yolk over here. That's why yolk sac is going to be empty. Now the question is then what kind of role it will play? It will have a role in the blood cell formation. So yolk sac will have a very important role in the blood cell formation in the developing embryo. So that is something you should be all clear with, right? And this bone marrow over here, right? Bone marrow is the one which is going to make the blood cell formation in the adults. So yolk sac का काम तो हमने यहाँ तक देख लिया, but उसके अलावा हमने एक और चीज यहाँ पे देखी. We have seen one more thing, that in the adult human being, it's the bone marrow which will make all the blood cells, right? And bone marrow you can either find the thigh, in the thigh bone you can have that. You can also have in the humerus as well. You can also have at other locations, but ये दो locations पे you'll have a major big bone marrow. So that is something you should be all clear with. गायत्री समझ आ रहा है? Yes, sir. गायत्री, all right, ठीक है. So now let's solve some questions. You will find some question getting repeated, but still you have to solve them so that because I want out of 40 you should be able to solve 35 questions. So you'll have to be very strong in these questions. So human blastocyst consists of, बताइए तनिष्क क्या होगा इसका आंसर? Both A and B. A and B. तनिष्क अब ये बता दो कि इनर सेल मास के अंदर you have one type of cells you get to see in the inner cell mass. उसके नाम क्या होता है बता सकते हो? Inner cell mass will have a one type of cell which you find in the inner cell mass, and those cells can form anything. So you have a term for those cells. What is that term over here? कोई बात नहीं. You have something like your stem cells. अब याद आ जाएगा सबको. Stem cells is something we have done this thing. So inner cell mass is known to have some stem cell which can make the complete embryo formation will be happening because of them, right? Then you have a trophoblast cell, and we have already discussed. शिखा बताओ trophoblast cell का रोल क्या होता है? It contains HCG, which helps in the maintaining the corpus luteum. Right, it secretes the HCG which maintains the corpus luteum. That's one thing. बहुत बढ़िया. और कुछ? उसके अलावा और कुछ बताओ.
helps maintain the progesterone level. ठीक है, वो सही है कि HCG आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, बना रहा है वो, राइट है, वो ठीक है. Mantasha, anything else you want to add over here about the trophoblast cells? So provides nourishment to the embryo. and nutrition provide. नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो like it is maintaining the endometrium lining over there, that's something I can see over there. बाकी नरिशमेंट तो डायरेक्टली एम्ब्रियो को प्रोवाइड नहीं करेगा. There is one thing you can tell me. हाँ जी तनिष बताइए. The outer layer है blastocyst. हाँ आउटर लेयर है बिल्कुल. अभी आउटर लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके यहाँ पे करती है, वो बता दो मुझे कि वो काम क्या कर रही है. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना. न्यूट्रिशन नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रिशन नहीं. Protection provide. प्रोटेक्शन तो Placenta develops. प्लेसेंटा फॉर्मेशन याद करो, क्रोनिक विला है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्रोनिक विला है ना. There is something which is coming from the trophoblast cell. So this chronic villi which is coming from trophoblast cell, that will help in the placenta formation. So ये बात आप यहाँ पे याद रखना. This will ultimately help in the placenta formation. तो ये वाली बात इसके साथ आप यहाँ पे याद रखना. ये finger like projection is nothing but my chronic villi, which will ultimately help in the placenta formation. So that is coming from the trophoblast cells. Okay, an organ built from the maternal and fetal tissue is called. An organ built from the maternal and the fetal tissue is called as what? जो दोनों साइड के टिश्यू से मिलके बनाया जाता है, उस ऑर्गन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अच्छा बस, that's it. मिसबा बोलिए क्या होगा आंसर? Option D, placenta. Very good. So placenta is going to be a correct answer. So please remember this thing very clearly, that placenta formation will involve both the tissues. You will have a maternal tissue as well and you will have a fetal tissue as well. Both of them are going to getting involved over here in the formation of the placenta. So that is why question number 20 over here becomes my correct answer. Now, placenta is a. Now take your time, read the question statement thoroughly and then try to answer this. They have given you 4 statements in terms of the placenta. Apna time lo. Take your 1 minute, 2 minutes and then try to tell me which one of them can be possibly a correct answer. कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन सब में से? ऑलराइट, बताइए शिखा, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी. यस सर. तनिष्क आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. डेली वाला डी लग रहा है तनिष्क को. एंड मिसबा आपको क्या लग रहा है? Option A. ऑप्शन ए. सब आंसर दिए. ऑलराइट, ओके चलिए देखते हैं. सो प्लेसेंटा इज अ कॉर्ड दैट कनेक्ट्स फीटस विद द वॉल ऑफ द मदर्स यूट्रस. दैट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट ओवर देयर, बट लेट्स कीप इट असाइड राइट नाउ. इसको दो मिनट साइड में रखते हैं. बी को देखते हैं हम यहाँ पे. A part of a mother's uterine wall through which exchange of material occurs between the mother and a fetus. ये गलत होगा क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया it is involvement of both the things. दोनों ही चीजें आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. Both the things are getting involved over here. The mother and the fetus दोनों के साइड से आपका इन्वॉल्वमेंट है ना आपका यहाँ पे. इसलिए ऑप्शन बी तो आपका हो नहीं सकता. ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? It's a part of a mother uterine wall. They are saying it is a part of only mother's uterine wall and doing all the things over there. तो इसलिए ये हो गया आपका यहाँ पे गलत. ऑप्शन सी यहाँ पे क्या कह रहा है? A part of a fetus through which exchange of material takes place between the fetus and the mother. This is also wrong. क्यों wrong है यहाँ पे? Why it is wrong again? Now tell me, you tell me why it is wrong. Because the end is protein. Again यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि सिर्फ fetus से हो रहा है. They are saying कि fetus के end से आपका ये बना हुआ है और इससे ये हो रहा है exchange of gases. Placenta हमेशा बना होगा with the combination of both the things, fetal and the maternal side. So that is why option D अगर आप यहाँ पे देखते हो, that seems much more appropriate. Chorionic villi of the fetus and part of a mother uterine wall through which a chemical exchange between the fetus and the mother can occurs. Now this becomes a much more appropriate answer over here because you are exchanging number of things. You are exchanging the like gases over there. You are exchanging the metabolites over there, right? So ये केमिकल का नाम देख के आप उसको अवॉइड मत करो. ये सबसे ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे आंसर है.
So that is why option D over here becomes a most appropriate answer compared to all of them. It's a best possible explanation of your placenta. So option D बनेगा मेरे यहाँ पे as a correct answer. ठीक है? I hope this is clear to all of you, Mantasha, Gayatri, and all the other people over here. It's clear to all of you. Now, freshly released human egg has. अगर human egg freshly released हुआ है, then what is something I'll get to have that. Now, please don't answer like jaldi se. Take your time and try to give me a correct answer. It's a simple question. Raise your hand. तनिष क्या लग रहा है? हाँ जी तनिष बोलिए. ऑप्शन सी. ओके. मंताशा आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. Option D. यार you people are like Misbah. मिसबा बोलो. कंफ्यूज सर. ओके, ये तो आंसर है नहीं. गायत्री. So option B. ऑप्शन डी या बी? बैटमैन या दिल्ली? So B. बैटमैन. एंड शिखा? Sir, option B. Okay, now please try to understand this thing. If I take out the cell from Tanishq, अगर मैं तनिष्क के बॉडी में से 2-4 सेल निकाल लेता हूँ, right? If I observe them under the microscope, so what I will get to see, I will have around 22 pairs of the autosomes, plus I will have XY chromosome. That is something I will find from the I will find the cells of in the Tanishq. So males are going to have XY chromosome, right? हाँ जी मिसबा बताइए. ऑप्शन बी. बैटमैन या दिल्ली, कौन सा? बैटमैन. Alright. In female, what happens now? If I take out some cells from Gayatri, what I'll get to see that she will have autosomes plus she will have XX chromosome, right? So female is going to have XX chromosome. अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक egg में से, right? एक egg में को अगर एक freshly released egg हुआ तो उसमें क्या होगा? So याद रखना, egg is always going to be haploid structure. Egg is always going to be a haploid structure, and if it is going to be a haploid structure, it will only have, first of all, you have to know egg will always have a X chromosome. It will never have X and Y chromosome. It will have X chromosome only. और क्योंकि egg आपका haploid होता है, so it will only have one X chromosome. So it will have only one X chromosome. याद रखना, तनिष्क and all of you, ये बात याद रखना कि जब egg release किया जाता है ना, egg के अंदर you will only have a single X chromosome. That means you will have an autosome plus X. Now when the अगर कोई स्पर्म आता है यहाँ पे, अगर मेल गैमेट कोई यहाँ पे आता है और वो मेल गैमेट आके फ्यूज करता है और वो मेल गैमेट के अंदर ऑटोजोम प्लस एक्स हुआ, बिकॉज मेल गैमेट तो आपके दो टाइप के बनेंगे, यू हैव एक्स वाले और वाई वाले. स्पर्म दो टाइप के बनते हैं, यू हैव एक्स स्पर्म एंड यू हैव वाई स्पर्म. सो इफ द एक्स स्पर्म गोज एंड बाइंड्स विद द एग, ना इफ दिस स्पर्म गोज एंड बाइंड्स विद द एग, then the result is going to be you will have the female zygote. The zygote is going to look like autosomes plus XX. Autosomes plus XX. So that is why you will realize, in that case you will realize over here that this zygote will turn into a female. This is going to be turning into a female embryo. So please याद रखना, it won't have 2X chromosome. 2X chromosome तो आपको diploid condition में मिलता है. याद रखना, this is something I will always find a diploid condition, and egg is always going to be a haploid. और haploid के अंदर आपको सिर्फ एक ही X chromosome मिलेगा. तो ऑप्शन बी, बैटमैन वाला बी, आपका यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाता है. तो ये एक बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है. In the absence of acrosome, the sperm what will happen with the sperm over here in the absence of acrosome? बताइए शिखा. Sir, option A. शिखा, मिसबा क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. And Tanishq and Gayatri, I'm also assuming you will say option A over here. Yes, so option A over here is the correct answer. The sperm is not going to penetrate the egg if you don't have acrosome over here. Now, anyone quickly tell me what is my capacitation? Hand raise करके explain कर दो, जल्दी से बता दो मुझे. What is my capacitation? What is your capacitation? जल्दी से hand raise करिए और बताइए. What do you mean by capacitation? ये हमने किया था. बताइए शिखा, क्या होगा इसके अंदर? What will be happening here?
The process of removing the fatty deposition on the sperm by the cervical mucus is known as capacitance. Right. And if that is not happening, then your sperm can never become active. So you have to carry out capacitation, and then only you will find your sperm becomes active and will be able to fertilize the egg. Bilkul say you have to remove the fatty deposition from the head of the sperm, and that event over here is called as your capacitation, and that's going to be a very important event. So yes, ये याद रखना. और इसको हम even short में even इसे बोलते हैं as a activation of sperm. In short, it has been also called as your activation of sperm. This can be also called as your activation of sperm. Okay, in the human female, the blastocyst is now which of the statement according to you can be true in terms of the blastocyst? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, एक बार ट्राई करो फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ. क्या लग रहा है मिसबा? Option B. बैटमैन. D. अच्छा, दिल्ली. तनिष्क क्या लग रहा है? So option D. मंताशा. Study. All right, so I'm assuming और बाकी बच्चे भी D बोलेंगे. So yes, option D over here becomes the correct answer. बहुत बढ़िया. Gets implanted in the endometrium by the trophoblast cell. Trophoblast cell actually help in getting implanted in the endometrium for the blastocyst. ठीक है. So पहला स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है. Forms placenta before even implantation. That's wrong. ऐसा नहीं होता कभी भी. Okay. Gets implanted into uterus in 3 days after ovulation. That's also untrue. It takes around like 7 days. Then only it will get implanted. So that's going to be untrue. ये भी गलत हो जाएगा आपके यहाँ पे. Gets nutrient from uterine endometrium secretion only after implantation. That is also going to be untrue over here. So option D becomes my most appropriate correct answer. Gestation period कितने टाइम का होता है? 9 months को convert कर लो यहाँ पे and tell me what can be the correct answer over here. बताइए तनिष्क क्या होगा इसका आंसर? 270 days. 270. शिखा आपको क्या लग रहा है? So option D. 270 days is the correct answer. Yes, that is the gestation period over here. शिखा याद है एलिफेंट का कितना होता था? किसी को याद नहीं? किसको याद नहीं? Anyone? 18 to 22 months. 22 months. 22 months. Yes, elephants will have 22 months of the gestation period, longest one. No one of you wants to become a veterinary doctor, na? No one. All of you want to become a MBBS. Yeah, Gayatri, tell us. So I'm become a veterinary doctor. Finally, someone wants to become a veterinarian. Very good, Gayatri. Very good. You are from Chennai, right? No, you are from Trichy. You are from Chennai. You have you visited to a place called as your MCBT? MCBT. How far you are from Chennai, by the way, Gayatri? Not that far, I guess. So you have a place called as your MCBT, that is called as the Madras Crocodile Bank Trust. You should visit sometime this place, right? If you are someone who wants to become a veterinarian and was like interested in treating animals, now it's a very good place over there. It is somewhere closer to some place starting from M. It's over there, right? All right. So by the way, Gayatri, यहाँ तक समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Gayatri madam. Can you say in English? Gayatri ma'am, I am saying, are you able to understand the things which you have covered by far? Yes, sir. All right. Okay. So that is something you have to see now. Amnion contains amniotic fluid, helps in what? So again, question was 17. Now please raise your hand to answer this quickly. So कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए मंताशा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. Gayatri, what do you think? So option D. Option D. Right.
So protection from the shock. So shock protection is something which will be given by my amnion. And please know the complete story how the amniotic fluid can be used for the correct purposes, or I would say the rightful purposes, and also for the something which is going to be illegal. Now, अब यहाँ पे पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो. Now what you have to see here, ना, you have to give me the what is I 1, 2 and 3, right? Now let me help you out over here. So 1 is this. यहाँ पे 1 है आपका. This is going to be the 1, right? ये जो cells लिखा हुआ है, that is going to be the 2 over here, and 3 is over here. Now take your time, take your 30 seconds, and now tell me what will be happening over here. What can be the correct answer? शिखा, बताइए क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. शिखा का कहना है यहाँ पे ऑप्शन डी. बाकी लोग भी देख लो आराम से, टेक योर टाइम. गायत्री. Sir, thinking. आप बाकी लोग भी देख सोच लो एक बार. You have to label me 1, 2 and 3. हाँ जी तनिष्क बताइए. So option D. मिसबा. Option D. Right. So option D over here becomes my correct answer. So we'll have 1 is going to be the androgen over here. That's a hormone. So ICH will come from pituitary gland. That is an interstitial cell stimulating hormone, right? That's another name for your like LH. So this will go and tell the Leydig cells to secrete a hormone. That's an androgen, right? Leydig cells are androgen ही आएगा, right? Then FSH will go and tell certain cells. So cells मेरे यहाँ पे होते हैं Sertoli cells, and they will help in my spermatogenesis में वो आपकी help करते हैं. So yes, option D when it comes to the correct answer. Again, this is a question where you can think and answer. Question बड़ा ही आसान सा है. हमने इसके बारे में पढ़ा भी था. You have heard this term before. So take your time, think wisely, and you should be able to answer this. Tell us, Misbah. Option B. Option B. Okay. Tell us, Gayatri. So option 1. Tanish. Option 3. 3. 3. Okay. Tanish is option 3. कौन रहेगा? शिखा बताइए. सर ऑप्शन सी. सी तो ही. Right. Okay. So now please pay attention over here. So option A तो बनेगा नहीं बेटा. Bartholin gland जब भी आपके सामने term आया, that is not seen in the males. This is a gland you find in the females surrounding the vagina. So on the either side of the vagina, we have done this thing. We have also done the question based on this, if you remember this thing. So Bartholin gland is something you find in the, it is seen in the females on the either side of the vagina. On either side of vagina. Right, on the either side of the vagina, there will be, you can actually get to see over here the presence of the Bartholin gland, right? And it is known to release some mucus-like secretion, and that mucus-like secretion works as a lubricant. It works as a lubricant, right? So option A तो मैंने यहाँ पे कभी होगा नहीं, ये तो मेरा गलत हो गया. B भी नहीं होगा because it is not seen in the males. Bartholin gland is not something you will find in the males, right? Then you have, हाँ जी मिस बा बोलिए. Sir, I got confused between bulbourethral gland and Bartholin. जमीन आसमान का फर्क है बाबा. उसमें बल्बोरेथल में कितना लंबा वर्ड है वो, बल्बोरेथल, एयर बार्थोलिन. Such a major difference over here, Mizwa. So now what you'll have a 3 and 4. So females are in females and helps in the vestibular lubrication. That is the correct option. That is the correct option by every means. The fourth one is also incorrect because the females produce estrogen. अरे नहीं बनाते estrogen. आप जानते हो estrogen कहाँ से आता है? It comes from the theca interna of the tertiary follicle. So that is why you should be able to answer this. ऐसे नहीं चलेगा. ऐसे आंसर क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर कैसे चलेगा बेटा? Okay. Now have a look at by yourself this question and then try to tell me the answer in this. Question number 5. Tell us, Shikha, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. Option A is going to be a correct answer. Yes, you will have the clitoris is going to be homologous to the glans of the
glass penis of the male, right? So that's a very true thing. Something we have already also done this. Spermiogenesis is a transformation of. So again, it's a simple question. Take your time. Take your 20 seconds. बताओ तनिष्क. So option 4. तनिष्क यहाँ पे मैं कह रही हूँ ऑप्शन 4. बाकी लोग भी. मिसबा. Option D. अरे Mantasha, tell me something. How many lectures you have missed from this chapter, Mantasha? Sir, 3. उसको पढ़ा, उसको फिर रिकॉर्डिंग देखा था क्या टाइम निकाल के कभी? सर सिर्फ 2 ही देख पाए, नहीं हुआ. अच्छा, 2 देखे, फिर उसके नोट्स बनाए. वो 2 जो देखे उसको समझ आ गए दोनों के दोनों? हाँ सर. तो थर्ड भी देखो और क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करो. टेस्ट आने वाला है. टेस्ट आ रहा है तो यू हैव टू कंपनसेट फॉर दैट. अभी मिस हुआ, वो चला गया, वो ठीक है, लेक्चर नहीं लगा पाए, बट अभी देखो लेक्चर और टेस्ट के लिए तैयारी करो. ठीक है? So I want you to get a very good score in the tests, unlike last time, है ना Mantasha? So this time just read, just go through the lectures and tell me. कुछ समझ नहीं आता तो बताओ मुझे, क्योंकि I know कि आपके लेक्चर मिस हुए because of your school. स्कूल का टाइमिंग आपका ऐसा होता है कि आप 3:30 बजे नहीं आ पाते हैं. So you have to read and you have to tell me कि कुछ समझ नहीं आता तो. मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर. हाँ, तो वो करना और क्वेश्चन सॉल्विंग करो जितना हो सके उतना. So that थोड़ा हमें भी एश्योरेंस मिलेगी, स्कोर बनेगा आपका टेस्ट के अंदर. सो यस, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. यस, स्पर्मेटिड से लेके स्पर्मेटोजोआ जो आप बना रहे हो यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी द स्पर्मोजेनेसिस. आफ्टर दैट यू विल हैव अ स्पर्मिएशन वेयर दिस स्पर्मेटोजोआ विल बी पुश्ड आउटसाइड द seminiferous tubule. So that will be called as your spermiation over here. So this is something you have to know. All right. The number of chromosomes in the primary spermatocyte is. अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को and then try to answer this. The number of chromosomes in the primary spermatocyte is going to be what? Oh, very good. शिखा बताइए. Sir, option D. Okay. तनिष्क क्या लग रहा है? So option 4. Option 4. मिसबा. Option D. गायत्री, over there in the class. गायत्री, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ बेटा. Gayatri, you also solve question as many as question as possible. You solve number of questions and you see what you have missed in the chapter, so that you can compensate for that. You can get back to me for that. Okay. So the school has started, so I have homework, so I am learning class and both, so I can't. Well, let it go homework. See, homework is something everyone gets, Gayatri. Everyone is going to get homework, and homework is something you will get throughout the year, right? That is something not going to change. So have to manage that. अच्छा, tell me what are your school timings, Gayatri? जल्दी बताओ, स्कूल के टाइमिंग क्या होता है आपके? So 8:30 to 5:30. 8:30 to 5:30. And then you attend the classes. Okay, that's why you are coming for the evening classes. Okay, got it. So lengthy school. Do they even teach for NEET exam as well, Gayatri? Some of. Okay, they only teach school boards, no NEET exam, na? Yes, sir. All right. Okay, ठीक है. देखते क्या करना पड़ेगा, कुछ solution निकालना पड़ेगा इसका. Okay, so the number of chromosome in primary spermatocyte is same as a spermatogonia. So first of all, you have to know the primary spermatocyte will be having diploid cells. And same as you will find in the spermatogonia. The spermatogonia is also going to have a presence of a diploid cells. So this will also have a presence of a diploid cells. Right? So that is why we'll say it is going to be same as a spermatogonia. बाकी सब के अंदर आपका हैप्लॉइड होता है. Okay? Now. Okay. The mammalian corpus luteum produces what? Now it's a very quick, you will just give me a quick answer over there. And yeah, tell us, Tanishk. Progesterone. Tanishk, now you have to tell me what will happen if the progesterone has been removed from the bloodstream suddenly. What's that? अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन अगर सडनली विड्रॉ कर लेते हैं, हम वहां से निकाल देते हैं, वहां से उस दौरान जब ये आ रहा है कॉर्पस लुटेयम से, तो फिर क्या होगा?
The endometrium line break होगी. Endometrium lining break होगी and everything will come out in a form of blood as a menstrual flow. Right. और उसके साथ साथ I will find now FSH and LH will start coming over here and will start developing the primary follicle into secondary follicle. बिल्कुल सही. So that Next side. हाँ, अगला साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा. So yes, that is going to be the progesterone and its role. बढ़िया. The lytic enzymes released by the sperm is. So बताइए कौन सा एंजाइम का नाम. अब ये भी आपको इसका रट्टा लगाना है, आपको याद रखना है. गायत्री, what will be the answer over here? गायत्री. So option B, sir. Right. Hyaluronidase is the correct answer. So hyaluronidase is the name of the enzyme we have to always remember in terms of the chromosome. हाँ जी मिसबा, आपका आंसर क्या आ रहा है? Option D. Right. So option D over here becomes my correct answer. Okay. So hyaluronidase is something which is going to be an enzyme over here, and this enzyme is something you will find always in the acrosomes, and that's my lytic enzyme. Right. How many eggs will be formed from a 100 primary oocyte? Question number 20. Simple question. Raise your hand and tell me. क्या लगता है तनिष्क? So 100. शिखा, आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. गायत्री, मंताशा. Option A. Sir, option A. Right. Option A over here becomes the correct answer, and same I think hoping for Misbah as well, going for option A only. And Misbah. So that is your Yes, sir. option A. So 100 primary oocyte will give you the 100 eggs. Which of the following is not a phase of a menstrual cycle? Which of them is not a phase of a menstrual cycle? So, oh, you have raised your hand. क्या बात है? मंताशा बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. मिसबा क्या लग रहा है? Option A. All right. So option A over here becomes the correct answer. Now there's one thing I want to tell you over here. This menstrual phase or menstrual cycle is something you find in the primata. You menstrual cycle जो हमने पढ़ा था, you get to find in the primata. So in the primata, that means monkeys, langurs, like monkeys, chimpanzees, and human beings, all of them are going to have a menstrual cycle. But when you get a term like a estrous cycle, so estrous cycle is something you find all the animals which are on a four leg. Estrous cycle आपको जो भी चार पैर पे चलने वाले animals होते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. All the animals which walk on a four leg will have a estrous cycle, like your dogs, cats, cows, buffaloes. All of them will have a estrous cycle. तो उनमें जो cycle होता है उसे हम कहते हैं as a estrous cycle. ठीक है? So menstrual cycle for the primata. Estrous cycle for your cow, dogs will have the estrous cycle. So you'll have a cow, I'll give an example. You'll have a dog as an example. So in them, the cycle is called as the estrous cycle. Now read by yourself and try to tell me the correct answer. खुद से पढ़ो question को and then try to tell me the correct answer over here. The dash layer that's. बताइए शिखा. Sir, option C. शिखा is saying option. तनिष्क क्या लग रहा है? So option C. बाकी लोग भी सोच लो. गायत्री. Yes, sir. Option C. Option C, sir. And Ms. Ba also saying option C. All right. So yes, endometrium of the uterus. That is the layer which will get removed every month in a cyclic way. So that's endometrium lining. Okay. Does anyone remember what was the role of the myometrium? बताइए शिखा. Sir, rhythmic contraction of the uterus while during parturition. Right. So that's something it will be doing over here. Okay. Now Shikha, you also tell me that from where the oxytocin is going to come. Posterior pituitary gland. और वो क्या करेगा आके? Uterine contraction. All right. Okay. Tell me, anyone raise your hand and tell me role of the prolactin and from where it is coming. Prolactin and its role and it from where it is coming. बताइए शिखा, आप बताइए, बोलिए. So it comes from the anterior pituitary and it helps in the formation of milk. What kind of role oxytocin will play in terms of lactation को लेके क्या role play करेगा oxytocin?
Anyone remembers that? ये हमने किया था. बोलो. Secretion of milk. So Ajay, Secretion of milk, right? Oxytocin will have a role to be played in the secretion of milk from the mammary glands. These are the information जो आपको you have to capture this information. ठीक है? Which of the following hormone controls the function of Sertoli cell? Again, a very simple question. Which of this is going to control the sport? इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो ध्यान से. मंताशा बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. All right, you're telling us option A as a correct answer. Okay. Mantasha, tell me now, this ये करता क्या है? एफएसएच जाके सर्टोल सेल को क्या बोलता है? फिर सर्टोल सेल क्या बनाते हैं? So this FSH will go and tell the sertoli cell, and the sertoli cell will start making something. What is that something? Proteins. बताइए मिसबा, बोलिए. Androgen, हाँ. spermiogenesis binding protein. Right. So this FSH will go and tell the sertoli cell to do something, and they will start making some factors which you call them as a androgen binding protein, which ultimately push for the event of my spermiogenesis. Right. So that is something you have to know. Okay, now read the question by yourself. Take your time, take your 30 seconds and tell me the answer over here. Which of the following is most likely the root cause of absence of menstruation, a human female having regular cycle? कर सकते हो. वेरी गुड शिखा. 2 मिनट रुक जाओ. बताइए गायत्री. sir option रिपीट योरसेल्फ. सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? ऑलराइट, तनिष्क बताओ क्या होगा इसका आंसर? आवाज ही नहीं आ रही बच्चों की. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई होप मेरी. Yes. हाँ. तनिष्क आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर ट्राई करना. So option C. मंताशा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? Sir, option A. शिखा आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. एंड मिसबा? Option D. ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर ना, दे आर, उन्होंने आपसे ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द रूट कॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. राइट, मोस्ट लाइकली. अब जो सबसे कॉमन लाइकली कॉज होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रेगनेंसी. बोला था ना आपको, if the girl gets pregnant, then that is, the girl is not going to show any kind of menstruation. Something I've told you. अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको बहुत पहले आपको बताया था, ये चीज मालूम होना ही चाहिए आपको. ये this is something you should be clear with, right? So most likely root cause is going to be the pregnancy. If the girl has attained a pregnancy, then there won't be any kind of menstruation. अब pregnancy होना मतलब क्या? Fertilization of the ovum. ये आपका यहाँ पे हो जाएगा. Fertilization of ovum is the best possible case where you will find a pregnancy will happen now, and now it won't be, you won't find any kind of menstruation happening. तनिष्क बताइए, बोलिए. तो ये तो गलत होगा कि फर्टिलाइजेशन एग का होता है, तो फिर ये स्टेटमेंट पूरी वैलिड नहीं है. बेटा समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो, बोलना वापस से. फर्टिलाइजेशन सर एग का होता है ना. फर्टिलाइजेशन किसका होता है? एग. हाँ राइट. हाँ, सो ओम इज द एग ओनली. सर थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर सेक्स हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन हाई होंगे, इसका मतलब भी वही है कि प्रेगनेंसी है, तो फिर ये भी तो हो सकता है. देखो इन्होंने, देखो क्वेश्चन में ये पूछा इन लोगों ने कि which of the following is the most likely root cause of absence of menstruation, a human female having regular cycle. Suddenly regular cycle जो human female है उसका suddenly you have absence of menstruation यहाँ पे हो रहा है, उसका most likely root cause यहाँ पे क्या हो सकता है? Now something we have also studied over here in the like पहले भी, कि अगर suddenly menstruation बंद हो जाता है of a woman who has been like active, who is a married woman, so what we will get to see that मेन रीजन क्या होगा आपके में? प्रेगनेंसी, राइट. तो अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम यहाँ पे हो रहा है, देन यू विल फाइंड दैट yes she will attend a pregnancy and now there is going to be no menstruation which will be happening.
ठीक है। अब आप यहाँ पे जो कह रहे हो ना ऑप्शन सी यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली बोला जाता है ना that you have a high amount of your like progesterone in the bloodstream compared to my estrogen, right? That can ensure that you will have no like if that is going to be the case, then it can ensure that you can have a condition where you have no menstruation happening over there, right? But ऐसा तो यहाँ पे specifically mention नहीं किया हुआ, they haven't mentioned this name of the hormones over there, right? So in that case, the most appropriate answer is going to be your option A. And there's one more possibility of having option D also becoming somewhat acceptable. Retention of the well-developed corpus luteum. अगर corpus luteum वहां पे आप retain कर लेते हो, then we know that यहाँ से आपका progesterone आपका आता रहेगा, और progesterone जब आपका यहाँ से आ रहा है, then it's going to ensure that the endometrium lining आपका पे maintained रहे. It won't get slogged off from there. तो ये भी आपका एक possible आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है. 3 इसलिए नहीं हो सकता because 3 में उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ अबाउट द हार्मोन्स ओवर देयर, दे हैवंट मेंशन्ड द हार्मोन्स ओवर देयर, राइट? अगर स्पेसिफिकली कोई मेंशन करता है कि देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड स्ट्रीम, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके, सो दिस इज अ कंडीशन वेयर यू विल स्टिल हैव अ एंडोमेट्रियम गेटिंग मेंटेन्ड ओवर देयर, राइट? इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कभी नहीं बन सकता. 1 बन सकता है यहाँ पे आपका आंसर एंड 4 बन सकता है. इन दोनों में से भी 1 इज अ मोस्ट मोर लाइकली वन बिकॉज दैट्स अ वेरी कॉमन रीजन. सडन में मेंस्ट्रुएशन बंद होने का जो रीजन आपका होता है, अगर आपको याद हो तो आपके 2-3 रीजन हमने देखे थे. एक हो सकता है आपका प्रेगनेंसी, एक हो सकता है स्ट्रेस, राइट, और अ हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 ओवर हियर बिकम्स अ मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस. एंड 1 and 4 आपके ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर है कंपेयर टू योर 3 एंड योर 4, 3 and 2. ठीक है, तो तनिष्क समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? यस सर. ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना सब लोग. ठीक है, चलो. Which extra embryonic membrane prevents desiccation of the embryo in the uterus? कौन बचाता है से? So शिखा बताइए. Sir, option B. तनिष्क क्या लग रहा है? एमनियन ले. राइट. मिसबा आपको क्या लग रहा है? Option 2. Yes, amnion is the correct answer. Amnion is the one जो desiccation से बचाएगा. This is the one which is going to have this fluidy environment surrounding itself. क्वेश्चन नंबर 11 हमने पहले भी किया था, इसको आप फटाफट वैसे ही अनम्यूटेड बता दो. 1 2 3 4 क्या होगा इसके अंदर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर? फुली डेवलप्ड fetus and option 3. Fully developed fetus and placenta are the one which will have a role in the like, yeah. Which of the following will induce the parturition? 1 2 3 4 बताइए शिखा. Sir, option B. इसका आंसर आपका हमेशा ऑप्शन भी आएगा, which is going to induce the parturition, right? So कई बार ऐसा होता है that if the girl is not able to synthesize natural oxytocin, then gynec उसे देगा ताकि आपका यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन आपका वहां पे हो, right? The fertilization of sperm and ova takes place where? So question number 19, again a simple question which can be answered quickly. मिसबा बताइए. मिसबा. Option A. Right. Option A over here becomes the correct answer. Ampullae of the oviduct is the location where I will be finding the sperm and the ova is going to fuse. Right. So these are the questions we have done, and we have done 2 new things. यहाँ पे हमने एक तो देखा हमारे कितनी polar body बनती है, जो हमारे यहाँ पे इतनी बनती है 3. That is something we have seen, and we have seen what is my extra embryonic membrane. अब इसके अलावा सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है क्वेश्चन सॉल्विंग की. The more amount of question you solve, the more better it is going to be for you. अच्छा, now tell me something before we leave the class. तनिष्क आपके स्कूल में अभी क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर अभी? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, so that is going to be your chapter number 4 आपका चल रहा है. Okay, then this one, गायत्री आपके स्कूल में क्या चल रहा है? Sir, can you repeat in English, sir? The question is, in your school, what they are been teaching in the school? Chapter, which chapter? Sir, reproduction in organisms, sir. That is not only NEET exam. अच्छा, okay, ठीक है, चलो. Okay, got it. For school ना, got it, ठीक है. हाँ जी, मिसबा बताइए आपका क्या चल रहा है? सर अभी हॉलीडे चल रही है, हॉलीडे से पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया. अच्छा ठीक है, मतलब चैप्टर 2 करेंगे वो लोग हॉलीडेज के बाद. ऑलराइट. एंड मंताशा आपका?
सर वो लोग इंडेक्स वाइज नहीं जा रहे हैं ऐसा। कुछ भी पढ़ा रहे हैं? बोलो क्या पढ़ा रहे हैं? सर अभी फिलहाल एवोल्यूशन चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। दैट इज गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 6। एंड शिखा आपका? सर अभी तो वैकेशन चल रही है, पर उससे पहले इनहेरिटेंस वाला चैप्टर खत्म ये हो था। गया? हाँ सर। बड़े तेजी में पढ़ा रहे बेटा आपको तो मिसबा, बहुत बढ़िया। पता नहीं था कॉलेज में इतने फटाफट पढ़ाई होती है। ऑलराइट, okay, all right. I just wanted to have a reference what has been happening in you class. So what will be happening? We'll be starting with the repetitive health from tomorrow onwards, and कल से वो start करेंगे. I think it won't take more amount of time because you know it's a small chapter. एक बार वो खत्म हो जाएगा, then we'll jump on to principle of inheritance, and that is a chapter which is a chapter which will have a content. जिसमें क्वेश्चन भी अच्छे बन जाते हैं, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छे उसके अंदर बन के आपको मिल जाएंगे. So we'll try to do a good number of questions from that particular chapter. ठीक है? तनिष्क अभी भी आपका वैकेशन ही चल रहा है ना अभी भी? यस सर। ठीक है, सो वैकेशन चल रहा है, सो यार समटाइम वी कैन मीट इन द मॉर्निंग. मंताशा मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता क्या आपको मिलना मॉर्निंग में? सर मॉर्निंग मीन्स एट व्हाट टाइम? अगर मैं 5:30 को बुलाऊं या 5:45 को बुलाऊं? हाँ सर चलेगा। ट्राई करना है, आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, लाइक इफ